चलिए, I have started the class. Uh, so, some of you who were there in the class yesterday, आप लोग सुने होंगे कि आज हम लोग जो है अपने प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर करंट प्रेसिडेंट, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, है ना? तो विल टॉक अबाउट हर पर्सनालिटी, उनका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट ऑल शी हैज डन, व्हाटएवर यू गाइस नो अबाउट हर और व्हाटएवर यू गाइस हैव फाउंड आउट अबाउट हर, राइट? You can talk about how educated she is, how humble she is, and what has been her political career and whatnot. ठीक है? तो um, I'm just letting you guys get started. जो भी लोग ready हैं वो लोग हाथ खड़ा करेंगे and you'll say few lines, okay, 5-6 lines, not more than that, so that everybody gets a chance. और दूसरा चीज ये करेंगे कि जो लोग भी, अगर मान लिया जाए कि आप फंस रहे हैं कहीं पे इंग्लिश बोलने में कि जिसको ये हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोल पा रहे हैं लेकिन इंग्लिश में फंस जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. यू विल से दैट इन हिंदी, बट व्हाट यू विल डू इज, आप बोलेंगे कि एंड यू कैन डू दैट पर्पसफुली ऑल्सो, कि भाई आज जो है हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताएंगे. आई विल से दैट इन हिंदी, और आप हर एक सेंटेंस बोलने के बाद रुकेंगे फॉर 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स एंड somebody विल ट्रांसलेट. अगर 2-3 सेकेंड में आप लोग में से कोई ट्रांसलेट नहीं किया तो हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? या 5 सेकेंड मान लिया जाए. आप हर एक जो 4 या 5 सेंटेंस बोलना है, तो या आप अगर हिंदी में फंस सॉरी इंग्लिश में फंस रहे हैं तो आप हिंदी में बोलेंगे. शुरू में आप बोल दें कि हम हिंदी में बोलने वाले हैं, सो दैट पीपल लाइक मी विल बी रेडी टू ट्रांसलेट. आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, रुक जाएंगे वहां पे फॉर 3 to 4 सेकेंड्स, वहां पे कोई ट्रांसलेट करेगा जाकर, ठीक है? और अगर इंग्लिश से बोल रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर 5 सेंटेंस सुनाएंगे, ठीक है? तो चलिए, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आज का हमारा जो है इस क्लास का पूरा एजेंडा जो है, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, हु इज आवर प्रेसिडेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाटएवर वी नो अबाउट हर, ठीक है? लेकिन कोई भी 4 या 5 सेंटेंस से ज्यादा नहीं, ताकि बाकी लोग को बोलने का मौका मिले. जो लोग ज्यादा बोलना चाहते हैं वो लोग 5 सेंटेंस के बाद रुक जाएंगे, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है? चलिए, लेट्स स्टार्ट. Whoever is ready, please raise your hand and then we'll get going from there. और जो लोग को याद नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट है आज की डेट में. तो you can search that in parallel. चलिए भाई, नाविया को हमारे जोक पसंद आए हैं. चलिए शुरू करते हैं. Whoever is ready, please raise your hand and try doing it quickly, क्योंकि हाथ रेज करने में, वेट करने में या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? चलिए रवि, बोलिए आप. रवि, आपने हाथ खड़ा किया था इसलिए आपका नाम लिया मैंने. रवि कुमार. नैतिक, बोलिए भाई, चलिए आप ही बोलिए. एंड अगेन, once I call out anybody's name, you'll have to start quickly so that no, we don't end up losing a lot of time waiting for each other. नैतिक, बोलिए बेटा. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Sir, Draupadi Murmu is an Indian politician, हम्म. and that some fact about Draupadi Murmu is, हम्म. firstly, she was born on June 20, 1958. हम्म. He is belongs from tribal community, and his education completed her Bachelor of Arts degree from Ramadevi Women's College. हम्म. And his political career, Murmu began her political career in the Bharatiya Janata Party and has held various positions. She has हम्म. elected as a member of MLA in हम्म. Odisha, हम्म. and he is also a governor of Jharkhand from 2015 to 2021, and becoming the first tribal woman to hold this position. हम्म. And in year 2022, he became President of India. हम्म. Draupadi Murmu was elected as the 15th President of India, and making her the second person from a tribal community to occupy this office. हम्म. And his Okay. achievement and contribution. Murmu has been known for her
work is promoting the welfare and tribal communities, and her contributions to religion development to Odisha and Jharkhand. That's all, sir. Very nice. देखिए, that's a good start, and again, it's not easy to be the first person to talk about something. Okay, it needs a lot of courage, and very well done, beta. Now, the only thing is, when we talk about anybody, it's very important to be careful about the gender part. In many places, I heard you saying he. That has to be very carefully handled. Okay, so he held multiple positions. He played certain role. That is what I heard couple of times. उसको थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे, है ना? We'll make sure that we take care of that part. Okay, but otherwise, kudos to what you did, Natik, like you always do. Very well done, beta. Okay, who is going next? तो शोले का एक डायलॉग याद आ रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है? Was this a very tough one? मतलब हम लोग अपने प्रेसिडेंट के बारे में नहीं जानते ठीक से, ऐसा है। चलिए नाविया बोलिए बेटा। नाविया बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए आप म्यूट पे हैं। Hello, sir. बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, आई कैन हियर यू। आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए नाविया। ओके, सो चलिए एक काम करते हैं, सुप्रिया आप बोलिए। सुप्रिया आप बोलेंगे? Yes, sir. बोलिए। Today my topic is Chhatrapati. Hello. हाँ बोलिए बोलिए बेटा, आपका हम सुन पा रहे हैं आवाज ना, बोलिए। Draupadi Murmu became the 15th President of India on 20 July 2022. She was born on 20 June 1958 in Mayuri Vansh of Odisha. She belonged to the Santali tribal community of scheduled tribe. She is the second woman president and first tribal woman president of India. Degree of Bachelor in Arts, she used to work as a teacher before entering politics. She was the governor of Jharkhand from 2015 to 2021. She was nominated by NDA for the 2022 presidential election and now she has become the president. She is a member of Bharatiya Janata Party. That's all, sir. Okay, very nice. चलिए, तो रुद्रा को जवाब, सवाल का जवाब मिल गया। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द्रौपदी मुर्मू, फ्यू सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर कंफर्टेबल विद। आचल बोलिए, जो हिंदी बोले उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। ओके, चलिए, तो नाविया रेडी है। नाविया बोल लीजिए, आप यू हैड स्टॉप्ड हाफवे थ्रू, तो बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर देन विल। नाविया बोल पाएंगे? Hello, sir.
बोलो बेटा। Today our topic is about Draupadi Murmu. So Draupadi Murmu's person personality. हो बस देखिए नाविया का कुछ तो, हाँ बोलिए बेटा। अच्छा चलिए नाविया का तो हम लोग वेट करते हैं। लेट्स गो टू आंचल। आंचल आप बोलिए बेटा। Good morning, sir. बोलिए बेटा। Today's our topic is Draupadi Murmu. हम्म Draupadi Murmu is the current president of India. हम्म She, she experienced poverty as a child. हम्म She completed her primary education in the village school. हम्म She subsequently earned a BA degree from Ramadevi Women's College in Bhubaneswar. She is the first woman from her village to complete a university education. Thank you, sir. No, that's all. ओके वेरी नाइस। चलिए रितिका को सुनते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today our topic is Draupadi Murmu. हम्म Draupadi Murmu became the 15th President of India on July 25, 2022. When she was sworn in by the Chief Justice of the country's Supreme Court, she is the first person from the tribal community and the second woman after Pratibha Patil to hold the office of President. She is also the first president to have been born in independent India as well as the youngest person to occupy the post. Draupadi Murmu was born on June 20, 1958 in Odisha state. ओके That's all, बोलिए sir. बेटा। Okay, very nice. Navya, do you want to try again? Your network was little patchy. Sir, what is the topic? So we are talking about our president, current president, Mrs. Draupadi Murmu. Hello, sir. Hello, beta. बोलिए। Okay. So today our topic is Draupadi Murmu. So Draupadi Murmu, a prominent Indian politician, educator, and stateswoman, has left an indelible mark on the politician landscape of India. Hailing from a humble background, she rose through the rank to become the governor of Jharkhand and even gained recognition as the NDA's Recognition. president candidate in 2022. Recognition word होता है, recognize होता है, recognition. Recognition. Draupadi Murmu was born on 20 July 1958 in Odisha. She is about 65 years old. Murmu's strong ties with her family have been a source of inspiration throughout her life. Her commitment to her roots and
upbringing has been evident in her public service and Hmm. dedication to uplift marginalized communities. Okay. About Murmu's teaching career, Hmm. uh, after completing her education, Draupadi Murmu ventured into the field of education as a teacher. Ventured बोलते हैं ना, ये नया venture start Ventured. किया. Ventured. She ventured into the field of education. She served as an educator, inspired young mind and nut- nurturing the potential of students. Hmm. Nurturing the potential of students, all right? NURTURING, correct? Nurture करना. During her tenure as a teacher, she contributes significantly to the education sector, laying the foundation for her illustration career in politics. Hmm. About Murmu's political career, Draupadi Murmu's entry into politics was a natural progression of her desire to create a positive impact on a large scale. Hmm. She joined the BJP and quickly became a prominent figure within the party due to her leadership qualities and dedication to public service. Hmm. About Murmu's award and honors, Draupadi Murmu's exemplary dedication to public service and her outstanding contribution to society have been recognized through various awards and honors. Hmm. Her work in promoting education, empowering women, and advocacy for the welfare of marginalized communities has earned her Im- immense respect and accolades from her peers and the nation. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. चलिए, बहुत कुछ नया नाविया ने. Let's go to Shivani. शिवानी बोलिए भाई. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today the topic is Draupadi Murmu. Hmm. The few sentences on Draupadi Murmu. Hmm. Draupadi Murmu made history by becoming the first tribal woman to be elected as the President of India in July 2022. She is the second woman to hold office after Pratibha Patil. Hmm. Draupadi Murmu's political career began in 1997 when she was elected as a councillor in Nagpur Nagar Panchayat. काउंसिलर. नगर पंचायत. हाँ. Hmm. And she then went on to become an MLA in Odisha. Hmm. She served in various capacities, including a Minister of State in the Odisha government, handling like commerce, transport, and fisheries. Hmm. Draupadi Murmu's life has been marked by profound personal loss. She lost her husband. Throughout her career, Murmu has been a vocal advocate for the rights of tribal communities. Throughout her career. Okay. Yes. Draupadi Murmu is known for the deep spiritual beliefs and practices. Hmm.
Her contribution to public life have been recognized with various awards, including the Nilkant Award for the Best MLA by Odisha Legislative Assembly. Hmm. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो एक चीज खाली देखिए बेटा, आपका आपका जो कमांड ओवर इंग्लिश इज सॉलिड। आई लिटरली लव दैट। ओके, नाउ I will whenever I keep kind of stopping you guys in between or keep correcting things, that is not with the intent to say anything wrong about what you are doing, but these are like those small opportunities to fine tune. Okay, and जो लोग भी वीडियो देखेंगे बाद में या रिवाइज करेंगे, उनके लिए है कि दी स्मॉल फाइन ट्यूनिंग्स, राइट, दैट एक्चुअली हेल्प्स। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मतलब डिप और डीप, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। डिप होता है ना, जैसे वो खाने में होता है, ये डिप किया उसको, डुबाया किसी चीज में। डीप मतलब होता है गहरा। तो अगर हम प्रोनाउंस करते हैं डिप और बोलते हैं डीप, you will feel the difference. So my request to everybody would be, when you pronounce a word, try pronouncing the best in the best possible form, so that the possibility of meaning getting changed is less. Okay? And again, you guys speak better English than I do, and I have no shame in acknowledging the fact that you guys are 10 levels above me when I was your age. तो आप लोग काफी अच्छा जा रहे हो। I'm just trying to get you guys a little more polished. Okay? चलिए आलोक के पास चलते हैं। आलोक इंग्लिश क्लास में ज्यादातर नहीं रहते हैं, तो आज आलोक हैं, तो लेट्स हियर आलोक आल्सो। आलोक बोलिए भाई। First of all, hello, sir. लो बेटा। And sir, second of all, I would like to say only a few sentences because there are lots of people in the line. Mm-hmm. May I, sir? Yeah, please go ahead. Draupadi Murmu is the first tribal woman president of India and the second woman president of India. Hmm. She is the youngest person to occupy the post of president at the age of 64. Hmm. She is a follower of Brahma Kumari's spiritual movement. Hmm. She won the presidential election of 2022 and became the president of India. Hmm. That's all, sir. Okay, very nice. So good job. Let's go to Ankit. Ankit बोलिए भाई। Hello, sir. लो बेटा। Today we topic is Draupadi Murmu. Hmm. Draupadi Murmu is the 15th President of India Hmm. and second woman President of India. Hmm. She was born on 20 June 1958 in Upadarbada village of Odisha. Hmm. Draupadi Murmu's father's name was Biransi Narayan Tudu. Hmm. Draupadi Murmu is the first president belong to the tribal community. Tribal community. Tribal. Hmm. Before entering politics, she worked as a clerk and a teacher. Hmm. Draupadi Murmu hold the position of governor in Jharkhand in 2015. Hmm. Draupadi Murmu is the youngest person to be the first president of India. Hmm. Draupadi Murmu got married to Shyam Charan Murmu in 1980. Hmm. Draupadi Murmu is the second woman after Pratibha Patil to serve as president of India. To serve as president of India. Hmm. Thank you, Sudhir sir. Very nice. चलिए चलते हैं। आजकल आपने बोल दिया था बेटा? नो। ओके,
सर मेरा दीपक बोलिए भाई। सर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was sworn in as the 15th President of India 25 July 2022. Hmm. She was a governor of Jharkhand from 2015 to 2021. From 1979 to 1983, she served as a junior assistant in the Irrigation and Power Department, Governor of Odisha. Hmm. She was appointed the Governor of Jharkhand on 18 May 2015. Hmm. Thank you, sir. वेरी नाइस। चलिए चलते हैं रुद्रा के पास। रुद्रा बोलिए भाई। रुद्रा आई कैन नॉट हियर यू। आप बोल रहे हो तो अनम्यूट कीजिए भाई। Hello, sir. लो बेटा। Today my topic about Draupadi Murmu. हम्म। Draupadi Murmu is an Indian politician who became the 15th President of India on July 25, 2022. हम्म। She is the first tribal woman and the second woman overall to hold the office of President in India. हम्म। Born on June 20, 1958 in a remote village in Odisha, she started her रिमोट political career. Yes, sir, रिमोट remote. विलेज। हम्म। Remote village in Odisha. She started her political career with the Bharatiya Janata Party (BJP) and has served in various capacities, including as the governor of Jharkhand from 2015 to 2021. हम्म। Draupadi Murmu's election as a president marks a significant milestone in India politics. सिग्निफिकेंट। हम्म। That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बीच में रोकते रहते हैं। सेम सेम थिंग आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। सो दिस इज जस्ट फॉर फाइन ट्यूनिंग दोस प्रोनाउंसिएशंस। सिग्निफिकेंट या जो जो वर्ड हम बोलेंगे ना उसको कहीं पे अगर आप लोग your chain of thought, I just that is just to make sure we are correcting it. चलिए वीर और क्रिस बोलिए भाई। Yes, sir. So today my sentence is on our respected President of India, Draupadi Murmu, are she was born on 20 June 1958. हम्म। Her children's names are Itshri Murmu, Lakshman Murmu, हम्म। and she has studied in Rama Devi Women's University. That's all, sir. बहुत बढ़िया। वीर भी है उधर। Yes, sir. ओके Sir, बोलिए। today topic is Draupadi Murmu. Draupadi Murmu is the 15th President of India. She was born on 20th June 1958. She was born in Utkal in Opreda village of Odisha. She is the second woman president after Pratibha Patil. She is also the youngest president of India. Draupadi Murmu was a teacher before becoming a president. She also served as a governor of Jharkhand in 2015 to 2021. She holded her position from 25 July 2022. That's all, sir. वेरी नाइस। तो चलिए फिर चलते हैं रौनक के पास। Good morning, sir. कोई नहीं बेटा। Today's my topic is Draupadi Murmu. हम्म। Draupadi Murmu became the 15th President of India on 20 July 2022. हम्म।
She was born on 20 January 1958 in Mayurpanch of Odisha. Mayurbhanj. Her father was a farmer. His name was Viranchi Narayan Tudu. Hmm. She is the second woman president and first tribal woman president of India. Hmm. She has a degree of Bachelor in Arts. Hmm. She, she used to work as a teacher before entering poli- politics. Politics. Pol- Politics. politics. Hmm. She was the government of Jharkhand from 2050 and 2021. Hmm. She is the member of Bharatiya Janata Party. Hmm. Thank you, sir. Very nice. चलिए चला जाए सोनम के पास. एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग इन एनी ऑर्डर. ओके, हमको जो स्क्रीन पे नाम दिख रहा है हम एक एक करके नाम बुला रहे हैं. ठीक है, सो जस्ट बेयर विथ मी. हाँ, बोलिए सलाम. Good evening, sir. बेटा. Today my topic is Draupadi Murmu. हम्म. Draupadi Murmu is the fifth and current president of India. हम्म. She is the first person belong to a scheduled tribe community to be election president of India. हम्म. Draupadi Murmu was born on 20 June 1958 in Vedaposhi village of Odisha. हम्म. Draupadi Murmu is an Indian politician belong to the Bharatiya Janata Party. हम्म. Draupadi Murmu is the first governor of Jharkhand. हम्म. She was nominated by NDA for the 2022 president election and now she has become the president. हम्म. She is the first scheduled tribe woman to be nominated for the post of President of India. हम्म. Draupadi Murmu served the people to being the vice president of scheduled tribe was the merchant in BJP. हम्म. Draupadi Murmu was an assignment teacher before joining politics. हम्म. That's all, sir. वेरी नाइस. चलिए चलते हैं साजिद के पास. रुद्रा साजिद. हम अजूमिंग की रुद्रा के साथ में साजिद हैं, तो अनम्यूट कीजिए और बोलिए भाई. Hello, sir. हेलो बेटा. Today's my topic is Draupadi Murmu. हम्म. Draupadi Murmu is the 15th President of India, making history as the first tribal woman to hold the highest office in the country. हम्म. Born on June 20, 1958 in the state of Odisha, she belongs to Santhal tribe. Before becoming president, she served as the governor of Jharkhand from 2015 to 2021. Draupadi Murmu has a strong background in the public service, with experience in various roles, including as a teacher and a politician with the Bharatiya Janata Party (BJP). Her election as president is seen as a significant milestone for the representation of tribal communities in India's political landscape. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. चलिए चलते हैं प्रिया कुमारी के पास. Good morning, sir. गुड इवनिंग सर. Today is my topic Draupadi Murmu. Draupadi Murmu became the fifth president of India. His father and grandfather were sarpanch of the village.
She was first woman governor of the state of Jharkhand. Hmm. Draupadi Murmu is an Indian politician. Hmm. She is the member of Bharatiya Janata Party. Hmm. She is the very strong and laborious woman. Hmm. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं, प्रिया कुमारी ने बोलते, तो प्रिया शर्मा के पास भी चलते हैं। प्रिया बोलिए भाई, प्रिया शर्मा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today is my topic about Draupadi Murmu. Draupadi Murmu's career began in 1979 at Odisha Irrigation and Power Department, where she was a junior assistant. She joined the Bharatiya Janata Party in 1997 and she was elected as councillor of Rairanjpur Nagar Panchayat. बोलिए। प्रिया शर्मा का लगता है ड्रॉप हो गया लगता है। ओके, तो ठीक है। इन द मीन टाइम व्हाइल वी वेटिंग फॉर प्रिया टू जॉइन बैक, माही आप बोलना चाहेंगे बेटा? Yes, sir. बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's topic is Draupadi Murmu. Draupadi Murmu is an Indian politician. Draupadi Murmu, born 20 June 1958, in an Indian politician who is the 15th President of India since 2022. She is the member of Bharatiya Janata Party. She was the 8th governor of Jharkhand from May 2015 to July 2021. She is the first governor of Jharkhand to finish the 5-year term. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। चलिए कुछ कुछ जैसे आप लोग सब शेयर करते हैं तो आई गेट टू हियर, आई गेट टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट? She was the first governor who could finish the 5-year term in Jharkhand. So that's a new information. Like I heard that she is the youngest president of India till date. That was another information that I was not aware of. Very well done बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए सुनैना बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is Draupadi Murmu. Draupadi Murmu biography, the 15th President of India. Draupadi Murmu is celebrating her 65th birthday anniversary today. Draupadi Murmu is a tribal leader from Rairanjpur in the Mayurbhanj district in Odisha. Draupadi Murmu is a soft-spoken leader who made her way into the politics of Odisha with her sheer hard work. That's all, sir. With her sheer hard work. Very nice, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं कि कौन छूट रहे हैं। माही आपने हाथ खड़ा किया, आपके साथ में और भी है कोई बोलने के लिए? नहीं, ओके। अब देखना है कि कौन छूट रहे हैं यहाँ पे क्लास में। सुमंत प्रियंका बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is Draupadi Murmu. बोलिए। Draupadi Murmu is an Indian politician who is the 15th President of India since 2022. Draupadi Murmu was born on 20 June 1958. She was the 8th governor of Jharkhand from May 2015 to July 21.
She is the first governor of Jharkhand to finish the 5th-year term. Draupadi Murmu became the first woman from her village to go to Bhubaneswar to complete graduation. That's also. बहुत बढ़िया. And some interesting fact is, I myself lived in Bhubaneswar, right? So this college, Ramadevi Women's College, is a college from where even my wife has done her graduation. So I know this college very well myself. Okay. चलिए सुमंत, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? Sir, 2 minutes. नहीं? Okay, कोई बात. Okay, let's see who is remaining. सुप्रिया ने बोल दिया है, सुनैना ने बोल दिया है, सुमंत ने बोल दिया है, प्रियंका ने बोल दिया है, सुमंत आएंगे. रौनक ने बोल दिया है, प्रिया कुमारी, प्रेम, सॉरी, वीर और कृष्ण ने बोल दिया है, माही ने बोल दिया, नैतिक का नंबर आ गया है, अंचल ने बोल दिया. Okay, I think everybody is covered. The only person remaining is Sumant. So Sumant, अगर आप ready हो तो सुनाइए कुछ, so that we can finish our discussion and then yeah, we'll be pretty much done for today. So while we're waiting for Sumant, I'm just throwing some idea कि next week में जो है Saturday तो हमारा 2 word का था, that is what we'll continue with. Sunday के लिए I'm planning to do something a little different. Okay, so I will share what the plan is. ठीक है, और उसके बाद जो है and also try to find out some ways to keep it more interactive, क्योंकि मतलब what I'm thinking is we will do some, okay, let me make it very clear to you guys. We'll do some translation challenge. Okay, translation challenge मतलब कि डेली बोलचाल में डिस्कशन करने में या कोई सिचुएशन को नरेट करने में हम लोग फंसते हैं कि भाई कैसे उसको ट्रांसलेट करना, कैसे बोलना है. तो वी विल फॉर्म 2 ग्रुप्स. One group will ask questions, second group will translate, and that is one thing. Second thing is like the exercise that we did last yesterday basically, right? जहाँ पे कि यहाँ कुछ लोग जो है अपना sentences बोल रहे थे, अपना शेयर कर रहे थे, और second person was kind of correcting it. तो it was only me doing the correction, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा वाइड स्प्रेड करेंगे कि भाई आपने अपना सिचुएशन सुनाया, नॉर्मल डिस्कशन किया, एज अ फ्रेंड दिस आर द करेक्शन दैट आई वुड वांट टू सजेस्ट. तो एक है ट्रांसलेशन, दूसरा है करेक्शन, राइट? तो दैट इज व्हाट वी विल डू ऑन संडे. तो वहां पे 2 ग्रुप बनाएंगे. आप लोग जो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाई ट्रांसलेट करो, मतलब फर्स्ट ग्रुप विच इज आस्किंग फॉर सर्टेन ट्रांसलेशन, इट्स नॉट दैट कि वो लोग हिंदी में ही बात करेंगे सिर्फ, उनको इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं होगा. वो ट्रांसलेशन के लिए बोलेंगे भाई ये मेरा पास सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करके बताओ, और वो अपना खुद से भी ट्रांसलेट करके रखेंगे. वो तो सामने वाला जब ट्रांसलेट करेगा तो उसमें अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है तो फाइन ट्यून करने के लिए, तो वो बताएंगे भाई देखो मैंने इसमें ऐसे किया था, दिस आल्सो यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन. So we'll try to translate around 20 sentences maximum in a class, but we'll make sure that everybody is able to pitch in their ideas, their point of view, unka translation ka style, what is their consideration. So it'll be more interactive class. थोड़ा लगेगा होता है थोड़ा बोरिंग हो, अगर लगा बोरिंग हुआ तो फिर कुछ और करेंगे अगले क्लास में, but yeah, we'll try doing different stuff so that it doesn't remain monotonous कि हाँ हर क्लास में आकर के सेम ही टाइम पास करके जाते हैं, समझे? ठीक है, तो we'll do it and see how interesting that gets, and based on that we'll plan the next steps. सुमंत, आप रेडी हो? सर वो नहीं है. ओके, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि कोई बच्चा छूट रहा है या सबने बोल दिया. आई थिंक
कुछ बच्चे भी ज्वाइन किए थे अभी। आई कैन सी अरुला गुप्ता है ज्वाइंड। गुप्ता, ओके। तो अरुला गुप्ता, आपको बेटा आज का हमारा टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी अभी प्रेसिडेंट हैं। तो आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में या तो अंग्रेजी में बोलिए या हिंदी में बोलिए। आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको कोई ट्रांसलेट करेगा, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कोई बात ही नहीं है। सर मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ। क्या क्या बोलिए। Sir, there are a sentences. Draupadi Murmu. Draupadi Murmu became 15 President of India on 20 July 2022. Draupadi Murmu, current President of India. Draupadi Murmu was born on 20 July 20 July that all sir. ओके, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे 20 जुलाई नहीं बोलेंगे, शी वाज बोर्न ऑन 20th जुलाई। तो ये छोटा सा करेक्शन है जो करेंगे तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा वो, है ना। ओके, चलिए धीरेन्द्र मिश्रा ज्वाइन किया और सुमंत ने भी हाथ खड़ा किया है, तो बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is Draupadi Murmu. Draupadi Murmu born 20 June 1958. Indian politician who is the 15th President of India since 2022. He was the ex-governor of Jharkhand for May 2050 to July 2021. Murmu became the first woman from the village to go to Bhubaneswar to complete graduation. She is an Indian politician, service as 15th and current President of India since 2022. That's also. बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं आंचल के पास में, और कोई है? आंचल अपने हाथ खड़ा किया बेटा, बोलिए। सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके, कोई बात नहीं, इस गलती के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए धीरेन्द्र मिश्रा आपने ज्वाइन किया है, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। तो आज हम लोग द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं अभी इंडिया की, उनके बारे में बात कर रहे थे। सबने अपना अपना जानकारी साझा किया। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। बाकी सभी बच्चों ने बोल दिया है, तो प्रॉब्ली विल कंक्लूड इट हियर। अगले क्लास में, अगला क्लास शनिवार को होगा फिर से, जब हम लोग बात करेंगे 2 वर्ड्स के बारे में जो हम लोग डेली करते हैं। बट संडे का क्लास में विल डू समथिंग लिटिल डिफरेंट, जहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन एंड करेक्शन, दैट्स व्हाट आई कॉल इट। कि एक तो होगा कि ट्रांसलेशन, करेक्शन, क्लास कन्वर्सेशन, जो भी बोलिए, कि मतलब जहाँ पे होगा आप लोग सबको सेंटेंसेस सोच के आएंगे कि भाई मेरा 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके सुनाओ। कोई सुनाएगा और उसमें गलतियां होंगी तो निकाली जाएंगी। और अगेन सेम थिंग, या फिर आप कुछ कन्वर्सेशन करेंगे कि भाई अपना सिचुएशन आप बताएंगे, उसके ऊपर जो करेक्शन होगा वो किया जाएगा। तो बस यही है। कल मतलब अगले सप्ताह के लिए हम जस्ट कुछ जानकारी शेयर कर रहे थे। नॉट टू वरी राइट नाउ। जाइए आप लोग, शाम को थोड़ा बाकी टाइम जो है, एंजॉय योर इवनिंग, हैव अ गुड डिनर। बाकी फिर अगले सप्ताह मिलते हैं फिर। ओके, चलिए फिर, टेक केयर
and see you guys next week. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye bye. Bye, sir.